You cannot keep it, but you can spend it. Once you have lost it, you can never get it back. So use it wisely. Good evening, one and all. I am Sukanya Verma, member of Social Responsibility Cell, Kalindi College, host of today's event. We usually listen to our elders saying time is most valuable coin in our life. You and you alone will determine how that coin will be spent. Time management is the thing that we all need in every field of our life. Until we can manage time, we can manage nothing else. In this regard, Social Responsibility Cell has organized a webinar on the topic time management. You will find insight on many answers of many questions like why time management is necessary, how we will utilize our time in the best way. We are glad to inform that our speaker for today is respected Amit Podar sir, a graduate from Sri Venkateshwar College and an MBA from Indian Institute of Planning and Management. We, on the behalf of Social Responsibility Cell of Kalindi College, heartily welcome you, sir. Without further delaying our event, I would like you to take over. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much for that introduction. I hope I'm audible. Yes, sir. Okay, thank you. Thank you. Okay, so hello everyone, all the respected teachers and all my students. So today's session will be on a very general topic, and that is time management. So, as already said by Sukanya, I mean, how our elders, always tell us the value of time and how we should actually utilize every bit of it, so that we are able to achieve our goals and our ambitions. So, that's a very crucial point to begin with, I think. So, to further discuss on this particular topic on time management, I'd like to share a presentation as well. But then before I do that, let us understand, I mean, why people today would need to be told on time management. I mean, it's very, I would say, not very common that okay, somebody else would talk of, the time management, because this is something which is our own. I mean, this is our valuable time. So probably the expectation is what? The expectation is that we should value something which is very important to us, like the money, or maybe the jewelry or something like that. So time actually is like that. So at the end of it, what it should be, I would say that we should be very serious about it on our own without somebody telling us about it. I mean, that's what should be the norm, the norm, if I tell you about that. But then sometimes what happens, very basic things in life, we tend to take it very lightly, and then somebody else comes and tells us, oh, see, this is important to you, this is something we should be doing, and we like it. Acha, somebody is helping me out in terms of how should I move forward, how should I organize myself and things like that. So they will like that. So all these advice which we get from our elders, from our friends, from our seniors, from our teachers, they should be really valued, I would say. So that has to come from within. That's very crucial. Good enough. So apart from that particular issue, where we look at time management during the COVID times, last 2 years, if you look at, I mean, it was a very different life. I mean, it was a very different world altogether in the last 2 years, and because of entirely different way of living for most of us, we had to again kind of recalibrate our timings, that how much for what and how much what. So a very different time, I would say, the last 2 years was. I don't know whether all of you would agree to me or not. Whatever we used to do before, say, 2020, I think January, and whatever we did after 2020 Jan Feb, whenever it was a lockdown, I think March sometime, entirely a very different process, I would say, a very different process. And one factor which creeped in over here was stress. Actually, if you look at that, stress thing came in for a lot of us. I cannot say all of us, but yes, for a lot of us.
एंड वहां पर फिर हो गया कि भाई अब इसको कैसे मैनेज करना, ये तो अजीब सी सिचुएशन आ गई। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि टाइम ज्यादा है और काम कम है, अभी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पास द टाइम, एकदम उल्टा ही हो गया। पहले क्वेश्चन वाज दैट कम टाइम है, इतनी सारी चीजों को कैसे मैनेज करें, और अभी एकदम एंटायरली डिफरेंट हो गया कि इतना टाइम है अभी क्या करें। आई मीन आई डोंट नो, वुड यू एग्री टू मी, सम ऑफ यू, टू व्हाटएवर आई एम सेइंग? ऐसा हुआ किसी के Yes, साथ? sir. I mean, it was entirely a different experience altogether. Yes, Ayushi, Sukanya, Anandita, of course. तो ये हमने कभी नहीं सोचा था. We never thought of it. That's right, Vanshika. So, 24 hours used to be like, how do I pass my time? What should be done? चलो, classes started later on, online classes and all that happened later on. But उसके पहले it was very difficult to manage things. So इस तरह के issues आए थे, and then I tell you, all of us, in fact, most of us were able to tackle that pressure, the stress, plus maybe कुछ लोग अगर बीमार हैं आसपास तो वो भी हैंडल करना पड़ता था, और वो सारी चीजें हम लोगों ने हैंडल करी। तो वहां से फिर बात आ गई टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट, एकदम सिमिलर चीज ऐसा लग रहा था कि टाइम और स्ट्रेस ऐसा लगता है कि एक साथ ही चल रहे हैं, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, इस तरह से लग रहा था। टाइम मैनेज ठीक से किया तो स्ट्रेस कम होगा, नहीं मैनेज कर पाए तो यू विल बी स्ट्रेस्ड आउट। So that factor crept in. So at the end of it, I would say whatever time is, it's a limited resource for all of us. और उस limited resource को हम कैसे use करेंगे, entirely depends on us. That's what I do. Okay, I'm trying to share the screen now. Sir, I'll stop sharing. Okay. I think I'm able to do that. Am I? I think yes. So I hope the screen is visible. Yes, sir. Okay, great. Yes. So वही है, I mean वही वाली बात I'll say, जो elders हमें बोलते हैं, बचपन से हम लोग सारे लोग सुनते आ रहे हैं ना ये point. देखो, time is money, all along. And we did not realize कि क्या actual में time money हो सकता है क्या. And then now we feel नहीं भाई, time is definitely money. जो time चला गया वो कुछ नहीं कर सकते आप उसको. You cannot change your past. I cannot change my first year's mark or my 12th marks or my 10th marks, board marks. I cannot change it. चला गया, वो time चला गया. So it is more like the example which is on the screen right now. I hope you can read it. So it says that imagine there is a bank which credits your account each morning with rupees 86,400. इतना पैसा आपके अकाउंट में डेली आता है, सुबह मॉर्निंग में, कभी भी किसी भी टाइम। और पॉइंट ये है दैट यू कैन और यू हैव टू स्पेंड ऑल द मनी on that same day, and if you don't spend it, it'll vanish from your account. So it says this much amount is credited in your bank, and this amount will not be carried forward if you do not spend it. आगे नहीं बढ़ेगा, खत्म हो जाएगा पैसा। अब मुझे पता है कि ये 86,400 मेरे अकाउंट में भी आ गया और ये आज मान लो 12 बजे रात तक खत्म हो जाएगा, तो व्हाट डू आई डू, क्या करूंगा मैं? अगर ये पैसा वैनिश हो जाएगा तो आई शुड नो कि वो क्या करना है मुझे। I'll do anything, चाहे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, anywhere, I'll do shopping, I'll do something, I'll spend it because I know ये तो मेरा खत्म होने वाला है 12 बजे के बाद रात। So allows you to keep no cash balance and every evening cancels whatever part of amount you had failed to use during the day. आप नहीं खर्च कर पाए तो पैसा खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्या करोगे आप? What will you do then? You would like to spend it, of course. कैसे जाने दोगे इतना पैसा? आया है तो कुछ तो करेंगे, कुछ तो खरीदेंगे, या किसी को डोनेट ही कर दो अगर ऐसा कुछ है तो। आई मीन दिस इज अ सोशल रिस्पांसिबिलिटी सेल, आई थिंक। तो भाई ऑफ कोर्स यू बिलीव इन सोसाइटी एंड डोनेशंस एंड अदर थिंग्स, तो हम उसको यूटिलाइज करेंगे। एंड इफ यू कैलकुलेट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द टाइम व्हिच यू हैव अराउंड 24 आवर्स into 60 minutes into 60 seconds, that is what we are talking of right now. This is the time I'm talking of right now, कि डेली आपके अकाउंट में, डेली अकाउंट में 86,400 सेकेंड्स क्रेडिट हो रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, और आपको इसको यूटिलाइज करना है। दैट्स हाउ इट इज। नहीं करोगे तो ये टाइम खत्म हो जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। सो दैट्स द होल पॉइंट, राइट?
सो हम सबके पास ऐसा एक बैंक है. Everyone has such a bank. Now it's up to you. How do you use it or you don't use it? And that bank is of course time. मतलब मैं अपने कंपनी की टाइम की बात नहीं कर रहा, मैं एक्चुअल वाले टाइम की बात कर रहा हूँ. That's what time is, right? Now, see, when we say कि you need to utilize it, so it doesn't mean कि आप 24 घंटे काम करो. Please don't take it that way. Don't take it that way. That will not be the right way of looking at the time management. Time management would be about utilizing every bit of it so that you can move forward, so that you can get to your dreams, so that you are able to also relax. You're able to give time to yourself as well. So it's everything. It's not that only working time. It's your sleeping time. It's your yoga time. It's your exercising time. It is meeting your friends time, meeting your parents, talking to them on the dinner table maybe. So it's everything included. तो ये मत सोचो कि आप हर मिनट को हम सिर्फ हार्ड वर्क में लगाएंगे. ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, और ऐसा कोई कर भी नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता. बट द पॉइंट इज ओवरऑल लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए हाउ शुड बी यूटिलाइज, राइट? सो दैट्स इट. अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इफ यू लुक एट टाइम मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशियल टू अस इफ यू लुक एट एनी एग्जाम. क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है, हमारे टीचर्स, पीपल अराउंड, दे टॉक टू अस एंड टेल अस प्लीज मैनेज योर टाइम जुडिशियसली. बोलते हैं वैसे, इतना टाइम है, एंटिसिपेट करो कितने क्वेश्चंस कर पाओगे आप इतने टाइम में. 2 hour का एग्जाम है, इफ इन केस 2 hours का, उसमें से देयर आर 100 क्वेश्चंस. सो हाउ मेनी वुड यू बी एबल टू डू? हाउ मेनी वुड यू लीव? वेयर वुड यू स्पेंड हाउ मच टाइम? आफ्टर हाउ मच टाइम शुड यू एग्जिट द क्वेश्चन? वी कॉल इट एग्जिट टाइम. कितने टाइम के बाद आपको पता चल जाएगा ये मेरे से नहीं होगा सॉल्व? ऑल दो स्टफ. So these things again is included in the overall time management. So that anticipation is very crucial. Anticipation. कि आगे क्या होने वाला है वो एंटिसिपेशन करते हैं बहुत बार. So that's also very crucial. See, look at a footballer for example. फुटबॉल मैच होता है जब भी, और जब ये लोग फुटबॉलर्स they play on the ground and they keep running with the ball. वो दौड़ रहे होते हैं बॉल के साथ. So whenever one person reaches the ball, the other person anticipates. What is the anticipation then? The anticipation is that okay, this football is with that player right now. After how much time this ball will reach this location here? इस location तक कब तक पहुंचेगी बॉल? Or what time will I take to reach from my current position? This is the current position to reach the ball, and then the player passes the ball not directly to me, but then थोड़ा सा आगे pass करता है. So see, this kind of time utilization, the management, the anticipation happens every time. अरे even when you cross the road, अरे आप रोड क्रॉस करते हो और इधर से कार्स वगैरह आ रही है, बसेस आ रही हैं, आप यहाँ पर खड़े हो और रोड क्रॉस करना है. डोंट यू एंटिसिपेट कि कितनी देर में वो बस यहाँ तक आ जाएगी और आई विल बी एबल टू क्रॉस द रोड? सो दिस इज नॉट समथिंग न्यू यू हैव बीन टोल्ड ओवर हियर टुडे. इट्स नॉट लाइक दैट. आपको पता है, आप यूटिलाइज करते हो डेली, राइट? सो दैट्स हाउ टाइम इज इन अ वे मैनेज्ड. ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट इट इज. इनफैक्ट अगर मैं बोलूं आपको कि टाइम मैनेजमेंट अगर हम लिटरली देखें तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा फ्लॉड है. अगर आप ध्यान से सोचो, वी कैन नॉट मैनेज टाइम. वी कैन नॉट. वी कैन मैनेज द वर्क विद इन दैट टाइम. प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. ऐसा लग रहा है टाइम मैनेजमेंट, ऐसा लग रहा है हमने टाइम को कंट्रोल कर लिया, उसको मैनेज करेंगे. अरे कोई नहीं कंट्रोल कर सकता टाइम. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट पॉइंट. वी कैन मैनेज आवर वर्क विद इन दैट टाइम. वी कैन नॉट मैनेज द टाइम इटसेल्फ कि चलो इतना टाइम अभी मैं रखता हूं, इसको आगे यूज करूंगा. नहीं हो सकता. प्लीज, दैट्स अगेन another simple basic point I would say, right? A lot of times we think, overthink, keep thinking on something, and now that amounts to daydreaming. That is where we are wasting our time. बहुत बार ऐसा होता है ना कि वेस्ट हो जाता है टाइम, कि कुछ किया नहीं, बुक्स तो खोल के बैठे थे बट कुछ कर नहीं पाए. So that is where I need to work on that and curtail that time. कि नहीं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना. अगर डे ड्रीम भी करनी है तो 2 मिनट 5 मिनट करा बस काफी है. ऐसा नहीं कि आधे 1 घंटे तक डे ड्रीम करते रहे और फिर एक घंटे के बाद किताब बंद कर दी कि चलो पढ़ लिया मैंने वाला. That's not good. So I mean that's where we need to plan.
You must have heard of the ex-president of America, Mr. Benjamin Franklin. So, in his biography, so he wrote about how did he used to spend his time and what happened during his time when he was the president. A lot of people would come to him. भाई उनके पास आते थे लोग बोलते थे अरे सर आप तो टाइम ही नहीं देते हमें आपने ये नहीं करा आपने वो नहीं करा यू आर नॉट मीटिंग अस तो ऐसे लोग कंप्लेन कर रहे थे जबकि भाई मिस्टर फ्रैंकलिन बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे फिर भी लोग कंप्लेन क्यों कर रहे थे which means ऐसा लग रहा था that probably he was working hard but then probably he was not dividing his time correctly that was the problem तो ये हमारे साथ बहुत बार होता है आई कम अक्रॉस सो मेनी स्टूडेंट्स वो बोलते सर आई बीन वर्किंग वेरी हार्ड बट मेरे नंबर नहीं आ रहे आई बीन वर्किंग वेरी हार्ड बट मैंने ये एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया आई बीन वर्किंग वेरी हार्ड सी ओनली हार्ड वर्क मे नॉट हेल्प मी रीच वेयरएवर आई विश टू डिपेंड ये करता है कि आपने वो जो हार्ड वर्क किया उसमें आपने प्रायोरिटी सेट करी क्या डिड यू प्रायोरिटाइज किसको कितना टाइम देना है किसको कम टाइम देना डिड यू डू दैट सो दैट वाज द प्रॉब्लम विद मिस्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन हुआ क्या कि इन्होंने ये पता करने के लिए कि प्रॉब्लम कहाँ है मेरे लाइफ में कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि टाइम नहीं दे रहा मैं उनको उन्होंने एक डायरी मेंटेन करी सो दिस फॉर ऑल ऑफ अस हम सब के लिए अब उस डायरी में क्या किया इन्होंने लिखना शुरू किया अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क एक कॉलम बनाई उन्होंने लेस इंपॉर्टेंट वर्क एक बनाई लीस्ट इंपॉर्टेंट एक बनाई अवॉइडेबल ऐसे करके उन्होंने ग्रुपिंग कर ली कि भाई ये टास्क अवॉइडेबल है ये सबसे कम जरूरी है ये बिल्कुल जरूरी नहीं है और ये इंपॉर्टेंट है ऐसे करके उन्होंने प्रायोरिटाइज कर और फिर जो जो काम वो करते गए ना उनको टिक करते जाते थे आज ये काम हो गया अच्छा ये वाला हो गया ऐसे टिक कर अब एक वीक के बाद उन्होंने अपना एनालिसिस करा रिव्यू करा ही केम टू नो दैट ही वर्कड ऑन लेस इंपॉर्टेंट एंड अवॉइडेबल टास्क मोर देन वर्थ डूइंग टास्क नाउ दिस इज व्हाट ही केम आउट ऑफ तो ये एक्सरसाइज हम अपने लिए भी कर सकते हैं हम लोग ट्राई कर सकते हैं नहीं आई एम नॉट सेइंग कि नहीं यू शुड यूटिलाइज एवरी सेकंड एवरी मिनट वो थोड़ा मुश्किल है आई नो मतलब इतना हम स्ट्रेस नहीं ले सकते इस टाइम पर बट इन अ वे डेली का टास्क मॉर्निंग में उठ के लिख लो आपको इतने टाइम कॉलेज करना है आज कॉलेज का होमवर्क है कुछ प्रिपरेशन के लिए आई नीड टू डू समथिंग फॉर 1 hour आई नीड टू रीड न्यूज़पेपर्स फॉर हाफ एन ऐसा करके कुछ एक अपने इंपॉर्टेंट टास्क की लिस्ट बना फिर एक अनइम्पॉर्टेंट वाली बनाओ अनइम्पॉर्टेंट मतलब हो जाएगा वॉचिंग टीवी फॉर मोर देन 2 hours अनइम्पॉर्टेंट है या फिर सर्फिंग द नेट मे बी लेस इंपॉर्टेंट है और मे बी एवरी नाउ एंड देन चेकिंग माई व्हाट्सएप एवरी नाउ एंड देन एवरी हाफ एन आवर नॉट हाफ एन आवर एवरी 10 minutes आई चेक माई व्हाट्सएप एवरी 10 minutes तो ये भी लिखो एवरी 10 minutes तो ऐसा करके आप बनाओ कि क्या क्या अनइम्पॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट है क्या लेस इंपॉर्टेंट है और फिर आप देखना कि आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपको टाइम कहाँ से स्क्वीज कर सकते हो फ्रॉम वेयर यू कैन टेक आउट टाइम सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज दिस इज वी आर बिजी विद आवर मोबाइल फोन्स वी आर बिजी विद सम ऑनलाइन movies and online web series ठीक है I'm not saying don't do that but please at least know how many hours did you give to web series today please know how much time did you give in front of the screen now this is very crucial screen time हमारी बहुत बढ़ चुकी है सब लोगों की लैपटॉप स्क्रीन टीवी स्क्रीन मोबाइल स्क्रीन आई टेल यू सिर्फ एक दिन अपने आप को दो प्लीज एक दिन कोई भी एक दिन और जस्ट काउंट द नंबर ऑफ आवर्स आई डोंट नो आप लोगों में से किसी ने करी है ये काउंट नंबर ऑफ आवर्स ऑन इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन एनीबडी कैन गिव अ फिगर टू मी कितने आवर्स के लिए आप नॉर्मली ऑनलाइन होते हो या आई मीन स्क्रीन देखते हो एनीबडी इन दैट 24 hours or how much time do you look at the screen is it 2 hours 3 hours 5 hours anything you like to say nothing as such I'm sure for most of you it should be more than 8 hours and for some of you it should be around 10 hours or even more than that I think so which means do you think we need to work on that कुछ तो करना पड़ेगा reduce करने के लिए otherwise we are playing with our health so that again part is important so please try to look at things which are less important avoidable important
and most important. ऐसा करके आप करोगे तो it will be really helpful. Now, there's one more thing I tell you about this time management and work you do. बहुत बार हमें लगता है अरे ये तो थक गए ये काम करके, बहुत कर लिया, बहुत थक गए. Can you think of a situation wherein you did something which you really enjoyed for a very long hour? So you did that for say around 6 hours, 5 hours, 7 hours. You did that for a very long hour, for long hours. And still you were not exhausted. And you felt great. You felt amazing. You felt that satisfaction. बहुत बार होता है ना? So whatever interests you, whatever you like, whatever you love, if you're asked to do that, and if you start enjoying it, then it's never exhausting. It's never exhausting. So, okay, just a second. Give me a second. एक second. Somebody was saying something. Yes, sir, slides were not changing. Acha, is that so? Currently, what slide can you see? Right now, the time one. In reality, there is no exhaustion of work. There is no exhaustion of work. Okay, just give me a moment, please. Just a second. Just a second. Okay. So currently, you can see that exhaustion. Is it changing now? No, sir, it's still the same. Which slide is it? From where it's in reality, there is no exhaustion of work done. Now also it's the same? Is it same now also? Yes, sir. Sure. Just a second. एक minute. I'll stop sharing and then again I'll try to share. Okay, sir. Okay. So is it a blank slide now? No, sir, it's not blank. The last line is it's myth that I'm tired due to so much work. Okay. You're saying it's not changing at all. Earlier you were able to see all the slides. You're changing. No, sir, it stopped on, at some point. Okay. And it is like fixed there. Yes, sir.
Okay, but then I'm changing the slides. I don't know why is it not changing. What's happening? Okay, let me share the entire screen then in that case, if that helps. So currently, what can you see now? You can see my screen. I mean, the entire screen. Yes, sir. Entire screen, right? Okay. So now let me see. I'll try to change the slides. I hope it works. Yes, sir. Now it's working. Exhaustion due to too much work. This is wrong. I mean, this is what you can see. Yes, sir. Okay, and now I changed it. In reality, now that's changed. Yes, sir. Great, thank you. Okay, so see, at the end of it, what I was talking of was that uh, anything which you enjoy, anything which you like, will not exhaust you much. To be very honest, you remember your, festival, college festival days, or maybe other normal party time or other things. So we enjoy the moment, and when you finish the work, you feel elated and happy rather than you feel exhausted. It's just the opposite. That once I work for 3, 4, 5 hours, and once I finish it, I feel relaxed rather than exhausted. Ulta hi hota, opposite hi hota. Because actually you enjoyed the work you were doing. So even that's how time can be utilized in the best possible manner. So engage yourself in activities which you like. Engage yourself in activities which is fruitful to you, and then you'll enjoy it and you'll be able to use it to the fullest. सारा कुछ आप use कर सकते. Now, if you look at another story, I would say on time management, I'm sure some of you must have come across the story. There was a philosophy professor, और वो philosophy professor थे एक बार पहुंचे अपने क्लास में, and then this time he was carrying all different things. He was not carrying books. वो पहुंचे क्लास में और वहां पर वो एक बहुत बड़ा सा जार लेकर गए थे, बड़ा सा ग्लास का जार, बिग जार, और he started putting big stones into the jar. बड़े बड़े stones put करने लगे उस जार के अंदर, बड़े जार. अब ये रॉक्स, मतलब बड़े रॉक्स, अब थोड़ी देर बाद रॉक्स ऊपर तक आ गए. एंड देन ही आस्क्ड द स्टूडेंट्स कि प्लीज टेल मी, इज द जार फुल? सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सेड हां सर, जार तो फुल हो गया, इट्स फुल बिकॉज़ यू फिल्ड द रॉक्स. बड़े बड़े रॉक्स डाल दिए अपने जार में. सो देन ही सेड ओके वेट. देन ही पिक सम स्मॉल पेबल्स, छोटे छोटे पेबल्स उठाए उन्होंने, और उसी जार में, ग्लास जार में उन्होंने पेबल्स डाल दिए, छोटे छोटे स्टोन्स. पहले बिग रॉक्स एंड देन स्मॉल स्टोन्स. And then those stones, they poured into the jar and then took those spaces available. जो rocks के बीच में spaces थे, उसमें जैसे अगर बड़े बड़े rocks हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े rocks, तो बीच बीच में छोटे छोटे, all those pebbles, वो set हो गया वहाँ ऐसा कर. So then he continued with this story. फिर बोला चलो ठीक है, भर गया अभी? Students हाँ सर भर गया, now it's full. Then he said चलो ठीक है, let's see. He then took some sand. उसमें हमने sand लिया, sand, and then he poured the sand inside the jar, and again sand was able to take space, available space. So sand filled up everything else. तो sand ने और भी जगह लेके भर लिया उसको. पहले big rocks, फिर small pebbles, फिर sand डाल दिया. अब तो स्टूडेंट ने बोला सर अब तो बिल्कुल भर गया, अभी कुछ नहीं हो सकता. So they said हाँ भर गया. So what do you say guys? Is it full or not, or something else can be poured? So big rocks, small pebbles, और अभी sand भी डाल दिया उसके अंदर, अभी पूरा भर गया. अभी can we pour something else in it? कुछ और डाल सकते हैं क्या इसमें? Because they said भर गया सब. And then everybody said yes sir, now it's full, nothing can be done. And then what the teacher did, he poured some water in it.
So he poured some water in it. So, which means at every stage, students felt that ये तो भर गया. हर स्टेज में बोल रहे भर गया. लेकिन they did not realize कि नहीं अभी तो और स्पेस था उसमें. So time is like that actually. So every moment you say अरे नहीं मेरे पास तो time नहीं, I'm so tied up, I don't have anything else to do. Oh, I should not exercise. Oh, I should not do yoga. Time कहाँ है मेरे पास? जिससे पूछो अरे time कहाँ है मेरे पास time नहीं, ऐसा बोलते लोग. भाई वही उन्होंने अपने टाइम को भर रखा है बड़ी बड़ी चीजों से, तो छोटी चीजें की जगह ही नहीं बची. मतलब आई मीन दे डोंट रियलाइज कि और चीजें आ सकती है उसके अंदर, बॉक्स के अंदर. सो दैट्स व्हाट हैपेंस विद अस. सो ऑल ऑफ अस हैव टाइम. द प्राइम मिनिस्टर हैज लॉट ऑफ टाइम, द प्रेसिडेंट हैज लॉट ऑफ टाइम, यू हैव लॉट ऑफ टाइम, आई हैव आल्सो लॉट ऑफ टाइम. द ओनली थिंग इज यू नीड टू prioritize it. You need to squeeze time for important people. That's very, very crucial. So then this professor had a very different way of explaining things. उन्होंने बोला देखो ये जो रॉक्स है ना, ये रॉक्स तुम्हारी फैमिली है, पार्टनर के जैसे हैं, तुम्हारी हेल्थ है और यंग वंस है जो भी. विच मीन्स रॉक्स आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ योर लाइफ. तो आपको सबसे पहले यू शुड टेक केयर ऑफ योर फैमिली, योर people who are around you, your health. This is the priority. जो पेबल्स है वो बाकी छोटी मोटी चीजें, आपकी कॉलेज हो गई, जॉब हो गया, कार हो गया, ये सब फिर उस पर ध्यान. So which means I need to focus more on my health, my family. That time has to be a separate time, and then I have to look at everything else. फिर बाकी वो जो sand है और वो जो water है, वो that is all your time on you spend on television, maybe on websites, और वो सब भी बात का वो टाइम. अब अगर मान लो सबसे पहले आपने जार में पानी भर लिया हो तो वाटर पूरा फुल, तो फिर कुछ और भरने की जगह ही नहीं होती उसमें, because everything is filled now, so nothing can be put. Even if you put some sand, it will spill, वो बाहर निकल जाए. और हम लोग लाइफ में ऐसे ही कर रहे हैं. अपने जो भी टाइम अवेलेबल होता है वी फिल दैट विद ऑल दीज थिंग्स व्हिच आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. सो दैट्स वेयर वी नीड टू लर्न फ्रॉम दिस एंड ट्राई टू डिवाइड टाइम अकॉर्डिंगली. So that's again one of the lessons I would say that professor wanted to tell his students. So as I told you already that the definition is that managing time, कैसे आप मैनेज करते हो टाइम, that's what time management is. और जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टाइम और स्ट्रेस एक दूसरे से कनेक्टेड है. बिकॉज इफ आई फेल टू डू जस्टिस विद द अलॉटेड टाइम आई हैव, दैट विल कॉज स्ट्रेस. इफ आई कंटिन्यू टेकिंग अ स्ट्रेस फॉर लॉट ऑफ टाइम, इन फैक्ट द फर्स्ट पार्ट आई वुड से इज एंजाइटी. व्हाट इफ यू ऑलवेज रीच समवेयर लेट? जस्ट लुक एट द एंजाइटी लेवल एवरी डे. हर दिन मान लो 10 मिनट 15 मिनट आप क्लास में लेट पहुंचते हो, कहीं पार्टी में लेट पहुंचते हो, कुछ भी होता है, तो आपको लगता है अरे ये तो टेंशन बढ़ जाती है, एंजाइटी हो जाती है. एंड द रीजन इज सिंपल, यू आर नॉट एबल टू प्रायोरिटाइज. आप अपने काम को आधे घंटे पहले या कम से कम 15 मिनट पहले वहां पहुंचने की कोशिश करो. जो भी जगह पहुंचनी है आप, प्लीज ट्राई टू रीच देयर एटलीस्ट 15 मिनट्स और हाफ एन आवर अर्लियर देन वॉट एवर द टाइम इज. आपको मूवी देखने जानी है, 3:30 का शो है, प्लीज बी देयर बाय 3 o'clock, 3 PM तक पहुंच जाओ. कॉलेज पहुंचनी है आपको 9 o'clock, 9 AM इज द टाइम पहुंचने का, प्लीज रीच देयर बाय 8:30. चलो 8:30 बहुत जल्दी हो गया, 8:45, मतलब एटलीस्ट 15 to 30 मिनट्स. इफ यू आर एबल टू डू इट, आई टेल यू 80% ऑफ योर स्ट्रेस विल बी टेकन केयर ऑफ. इट्स फॉर ऑल ऑफ अस, सबके लिए, हम सबके लिए. कहीं भी आपको पहुंचनी है 15 मिनट आधे घंटे पहले पहुंचो, आपका 80% स्ट्रेस लेवल कम होगा, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी. That's how it is, right? So that is one very crucial thing to manage your stress level, right? Or another important thing to manage your stress is expectation. A lot of times we try to behave as people around want us to do, and then we are under that pressure of managing expectations of everybody around. I tell you, that is something which is not possible. Nothing is perfect, we cannot be perfect. So please have some realistic goals, realistic dreams. अपने goals को थोड़ा realistic रखो, और उससे क्या होगा, आप you'll be able to
kind of make yourself stress free, at least, in these times when, there's stress, there's problem every time. So please try to fulfill the expectations which are very crucial rather than going by everybody's expectations. कि सबकी expectation manage करना है, उसके लिए आप अपने आप को ही ठीक से नहीं रख पाओगे. So at the end of it, when you say social service starts from self, which means if I'm not happy, if I'm unable to manage my own time, if I'm unable to manage, my own goals and dreams, I cannot do anything for others. So that's why the goal should be very realistic. So there you need to plan and strategize. So that's very, very crucial. I mean, it's not about being religious. जैसे stress handle करना है तो ऐसा नहीं कि मुझे religious होना पड़ेगा and then only I'll be able to manage. ऐसा कुछ नहीं है. I mean, normally लोग बोलते हैं कि भाई desire जो है is cause of all the problems. I mean, Buddhist, Gautam Buddha used to say that. All this suffering, all this pain, misery, ये थोड़ी philosophical बातें हैं. So it says that the second truth is that this suffering is caused by selfish craving and personal desire. So of course देखो, we cannot end our desires. और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ desire को कम कर लो, ऐसा नहीं. But वही बात है कि जो भी desire करते हो आप, उसके लिए थोड़ा work करो, देखो क्या achievable है, क्या achievable नहीं है. So look at those things, right? So probably we can look at this. कि जो आपकी desire है वो, is it worth it? Is it something more than whatever you can achieve? Is it something less than that? आपको थोड़ा weigh करना पड़ेगा. And then you'll see that it will not be a problem. So we are talking of managing the root itself, the root cause of something, right? So you need to manage it. ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना है, manage करना पड़ेगा. And you'll see that you'll be able to manage stress, ज़्यादा issue नहीं है, right? So time management is something wherein we manage our work within that time rather than manipulating time. We cannot manipulate time. Time उतना ही है, fix रहेगा. उतना ही time fix रहेगा. So बहुत बार साइंटिस्ट बोलते हैं टाइम दो तरीके से चलता है. एक चलता है पास्ट चला गया, प्रेजेंट अभी है और फ्यूचर में टाइम चला जाएगा, ऐसे करें. दिस हाउ टाइम मूव्स. और एक दूसरा टाइम का एक कॉन्सेप्ट है साइंस में. दे से दैट टाइम इज लाइक ए कैलेंडर की तरह है, जहां पर पूरा टाइम एक बॉक्स में है. एवरीथिंग इज देयर इन दैट बॉक्स. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सब उसी जगह पर फिक्स्ड. एंड द कॉन्सेप्ट सेज देखो टाइम मूव नहीं करता, टाइम फिक्स्ड है, ऐसा बोलते हैं कॉन्सेप्ट. जैसे कोई मूवी वगैरह देखी आपने, इंटरस्टेलर, जैसे कि टाइम फिक्स्ड है. सो एवरीथिंग इज देयर इन द यूनिवर्स. आपने जो पास्ट में किया, फ्यूचर में करोगे, जो भी, वो सब फिट है कहीं ना कहीं. एंड यू कैन गो देयर, यू कैन टाइम ट्रैवल एंड थिंग्स लाइक दैट. सो साइंटिफिक रिसर्च एंड डिस्कवरीज हैव बीन गॉन इनटू ऑल दिस टाइम ट्रैवल एंड ऑल दिस टाइम मशीन एक्सेट्रा. बट जो भी जनरल थिंग इज दैट प्रेजेंट मोमेंट है, विल गो टू पास्ट एंड देन विल गो टू फ्यूचर. दैट्स हाउ टाइम मूव्स. तो टाइम को रोक नहीं सकते हम, अपने काम को मैनेज कर सकते हैं, हम टाइम को मैनेज नहीं कर सकते. सोच, अगर लिटरल टर्म्स में आप देखो तो वही बात है. ओके, सो दैट्स द डेफिनेशन. नाउ द नेक्स्ट थिंग ओवर हियर इज, अब आप जो भी मैनेज करोगे तो प्लीज स्टार्ट विद दीज क्वेश्चंस कि भाई कितना टाइम मेरे पास. 24 आवर्स है, 24 आवर्स में आई स्लीप फॉर 8 आवर्स. चलो ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम. I'll do some, extra work for 3 to 4 hours. ठीक है, हो गया. यानी कि 12-13 घंटे निकाल दो, हटा दो. उस टाइम कुछ नहीं करूंगा. I'll not think of anything. So I'm left with how much time now? Okay, I'm left with say 8, 4, 13, 14 hours gone. I'm left with 8 hours. No, sorry, 10 hours. अगर 14 चला गया, 10 hours बच गया. अभी 10 hours को मुझे यूटिलाइज करना है. So it's not utilizing your 24 hours. Please don't think like that. 24 घंटे यूटिलाइज नहीं करने का. आपको 8-10 घंटे यूटिलाइज करनी, वो देख लो आप कैसे करो. उस 10 घंटे में अपने गोल्स को सेट करो. नोबडी इज आस्किंग यू टू मैनेज 24 आवर्स. फॉरगेट इट. 8 आवर्स 9 आवर्स की स्लीप चाहिए आपको, ठीक है, ले लो, नॉट अ प्रॉब्लम. बाकी आप 1-2-3 घंटे इधर उधर चलेगा. बाकी जो टाइम बचा 8-10 घंटे, उसको आप मैनेज करना है, क्या करना है, राइट. एंड व्हेन यू से अरे ये तो मेरा फ्री टाइम है, सो इवन इन फ्री टाइम वी काइंड ऑफ एंगेज आवरसेल्व्स इन व्हाट hobbies. We engage ourselves in some extracurriculars. Don't you do that? तो फ्री टाइम पे तो एंजॉय कर रहे हैं हम, अच्छा लग रहा है फ्री टाइम. बहुत ब्रेक ले लेते हैं हम लोग. ब्रेक में थोड़ा
घूम लिया थोड़ा, वॉक कर ली, you know, all those things. Now the next question you should ask yourself, do you have a schedule? Normally in most cases, though we have schedule, but then we don't go according to that. बहुत बार ऐसा होता है. But normally college का schedule है, school का schedule है, you have schedule. So if you do not have it, make it. कि ये schedule है मेरा. और उस schedule के time पर how do I manage other things? Another question you should ask yourself, do I procrastinate? I need to submit my project tomorrow. So what do? Do I finish it tomorrow morning itself, or do I finish it today, or do I not finish it tomorrow also? बाद में देख लेंगे. So do you do that? So these questions needs to be asked before you start working on your management skills. Right? That's again some simple stuff. So I mean that's what I told you. There's a lot of time we have. See, बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोग कुछ गोल्स बनाते हैं ना और वो ऐसा लगता है कि यार ये तो बर्डन है, फाइनल एग्जाम्स बर्डन है. इट्स नॉट अ बर्डन. वो यूनिट टेस्ट है कल मेरा, कैसे करूं, क्या करूं. सो प्लीज डू नॉट टेक इट एज अ बर्डन. इफ यू टेक इट लाइक दैट तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली स्ट्रेस आ जाएगा. लुक एट इट एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. अरे ठीक है, दैट्स व्हाट इट इज. As in part of my schedule, part of my life. एग्जाम से बच नहीं सकते, सीधी बात. एक्सेप्ट करो ना, एक्सेप्ट करो. you've taken so many exams so far. अगर आप नर्सरी केजी 1 2 3 4 5 से लेकर अभी तक काउंट करो, innumerable exams, hundreds of tests you took, hundreds of exams, this test, that test, half yearly, final, so many exams. So still how it is a burden? You must be used to it, something like that. आगे जाकर there will be competitive exams, CAT exams, that or GMAT or GRE or UPSC or some other exam. So that is the first step. Stress हटानी है आपको. आप अपने गोल्स को बर्डन की तरह मत लो. Don't take the burden. Feel free. Be happy about achieving your goals. Enjoy the process. Enjoy the path. पाथ को एंजॉय करो. गोल ऑटोमेटिकली अपने पास होगा. पाथ को एंजॉय नहीं करोगे, सिर्फ गोल के बारे में सोचोगे तो एंजॉय नहीं, तो फिर क्या, इट बी डिफिकल्ट. सो एंजॉय द जर्नी माय डियर स्टूडेंट्स. एंजॉय द जर्नी एंड यू विल रीच योर गोल्स. राइट? और बहुत लंबे प्लान मत करो. मुझे आज से 20 साल के बाद इतना पोजीशन पे होना है और इतना पैसा चाहिए मुझे. डोंट हैव दैट लॉन्ग टर्म गोल ओनली. हैव अ शॉर्ट टर्म, हैव अ वीकली गोल, वीकली प्लान, daily plan, short term goals, 3 to 5 years का गोल, 3 से 5 साल में I'll be able to do this. ऐसा short term goals, 1 से 2 साल में I'll be here. देखो short term goals अचीवेबल होते हैं. अगर देखो short term goals अचीवेबल होते हैं. आप क्रिकेट मैचेस में देखते हो, हर ओवर का प्लान होता है. फॉर एवरी 6 balls दे हैव अ प्लान कि कौन बॉलिंग करेगा, कितने रन देंगे, कितने रन नहीं देंगे, ये सब प्लान करते हैं. तो शॉर्ट टर्म प्लान्स, और ये शॉर्ट टर्म प्लान्स को मॉनिटर कर सकते हैं. मॉनिटर कर सकते हैं इसका मतलब ऐसे ना रिव्यू कर सकते हैं कि डिड आई अचीव, डिड आई नॉट अचीव, व्हाट पोर्शन ऑफ इट वाज अचीव्ड. और अगर कुछ लगता है नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं लग रहा, गोल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, चेंज इट. सी चेंज गोल्स इफ नीडेड, क्योंकि बहुत बार हमें पता नहीं होता कि 1 से 2 साल में यहां पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे. हम एग्जैक्टली एसेटेन नहीं कर सकते. सो उस केस में फिर रिव्यू करना पड़ेगा ना. तो ये चीजें करेंगे ना तो बर्डन नहीं लगेगा. यू विल नॉट फील इट एज अ बर्डन. नहीं, इट विल बी अ बर्डन फॉर, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज वंस यू स्टार्ट लुकिंग एट इट. तो स्टेप वाइज क्या करना है, आप अपना कैलेंडर देखो कि देखो क्या सिलेबस है, क्या शेड्यूल है. जो भी लैब टाइम है, क्लास टाइम है, वो टाइम को ब्लॉक करो. उस टाइम पर आई विल नॉट डू एनीथिंग एल्स. आई विल नॉट गो ऑन अ टूर और समथिंग एंड वेस्ट माय टाइम, क्योंकि मेरा एग्जाम अगले महीने है, समथिंग. अपनी स्टडी टाइम को छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांट दो. 50 मिनट्स, नॉट इवन 1 hour. आई टेल यू विल एंजॉय इट, मजा आएगा. 50 मिनट्स पढ़ाई करी, उठ जाओ, कुछ और करो. मूव हियर एंड देयर, व्हाटएवर यू वांट टू डू. खाना खाया, थोड़ा कुछ भी करो. आई कैन सिट डाउन 50 मिनट्स. देखो कोई भी सामान मार्केट में अगर मान लो 999 का मिलता है तो अच्छा लगता है सुनने में, और वैसे ही अगर वो बोलेंगे नहीं ये
₹1005 का है, तो क्या पता आप नहीं खरीदोगे, लेकिन 999 में बेचते तो खरीद लेते हैं। क्यों? द सेम थिंग जो कि 999 में आपने दिया, वो 1005 में आप नहीं खरीद रहे, क्योंकि वो ₹1000 का बर्डन आया था। 1000 नो, बहुत ज्यादा है, 1000। और 999, 999, 999, वाह, वेरी गुड। नो, दीज थिंग्स आर मोटिवेटिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आपको तो पहले देखो, 2 घंटे से पहले उठना मत, बस हो गया, बर्डन ले लिया आपने, 2 घंटे हो गए। फिर तो भाई पहले कुछ टाइम एंजॉय करोगे, बाद में प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। तो देखो, अपने एबिलिटी के हिसाब से आप ब्लॉक बनाओ। आप 50 मिनट के बना सकते हो, 1 घंटे का भी बना सकते हो, 2 घंटे का भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन हैव दोस टाइम ब्लॉक जो कि आपको अच्छा लगे, राइट? और अगर आपने कुछ कर लिया, अचीव कर लिया, प्लीज रिवॉर्ड योरसेल्फ। अरे आज मैंने तो 4 घंटे का जो स्लॉट था पूरा कंप्लीट किया, तो आज आई विल वॉच अ मूवी इन द इवनिंग। बिल्कुल सही, यू डिजर्व इट, यू डिजर्व इट। क्यों? क्योंकि तुमने आज की शेड्यूल पूरी करी है, तो यू डिजर्व अ रिवॉर्ड। तो खुद को रिवॉर्ड दो। आज आप एक मूवी देखो, लेकिन ये तब करना जब आपने पहली वाली शेड्यूल पूरी की। नहीं करा पूरा अगर शेड्यूल, तो प्लीज यू डोंट डिजर्व अ रिवॉर्ड। तो ऐसे रिवॉर्ड करोगे ना, तो मोटिवेटिंग होता है। सो ऑल दीज थिंग्स, छोटी बातें बताते रहते यू, इट कैन हेल्प यू मूव ऑन। और वही समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, अर्जेंट में डिवाइड करके काम करो। और मैं ये 24 घंटे की बात नहीं कर रहा हूँ, माइंड यू, आई एम ओनली टॉकिंग ऑफ 8 to 10 आवर्स। बाकी टाइम मैंने आपको छोड़ दिया, 8 to 10 आवर्स ऑफ स्लीप और बाकी 2-3 आवर्स व्हाटएवर। जस्ट 8 to 10 आवर्स जो आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना है। You feel good about managing all these things, right? प्रायोरिटी सेट करो अपने। और अब थोड़ा और अंदर जाओ, स्ट्रेस मैनेजमेंट वगैरह में, तो बहुत बार हमें लगता है क्या क्या मेरे लिए बहुत जरूरी है, खाना, सोना, पर्सनल, ये बहुत जरूरी, आर नीड्स, इसको तो छोड़ नहीं सकते। अरे आज तो 3 पार्टीज है, कैसे तीनों पार्टी में जाऊंगा मैं? डिजायर, तीनों पार्टी में नहीं जा सकते यार, तीनों 8 से 8 बजे है इवनिंग में, तीनों कैसे चले जाओगे आप? सो दैट्स वेयर हमें लिमिट करना पड़ेगा। अरे आज तो मैंने वीडियो गेम खेली नहीं, रोज खेलता हूं मैं, आज नहीं खेला। कम ऑन, एक दिन नहीं खेलोगे तो क्या हो गया? समथिंग ऑफ दैट। सो दैट दीज आर डिजायर्स, इसको कंट्रोल करो। ऑब्लिगेशन, वही एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स, हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स। यू नो, माय फ्रेंड एक्सपेक्टेड मी टू बी देयर, मैं गया नहीं, उसे बुरा लग गया, तो उससे स्ट्रेस, एंजाइटी हो। तो इन चीजों को मैनेज करो बेटर तरीके से। सो that's how you can balance between your academic, social life and time. देखो, ये पार्ट बहुत क्रूशियल है, बहुत क्रूशियल है, क्योंकि एकेडमिकली ये टाइम मिल जाता है, कॉलेज जाते, पढ़ाई करते, हैंग आउट भी करते, सोशल लाइफ। अपने लिए बहुत बार हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं होता, बस सोते हैं, सो गए तो बस हो गया, ऐसा नहीं। सो टाइम अलोन का मतलब है व्हेन यू इंट्रोस्पेक्ट, when you motivate yourself, अरे हाँ आज तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, अपने आप को खुद बोलो, या फिर थोड़ा योगा कर लिया, फील बेटर, या फिर यू नो एक्सरसाइज कर लिया, थोड़ा डांस कर लिया, यू फील दैट। सो अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल, when you're alone, talk to yourself, you know, something like that. So this is very really helpful. और देखो, ये चीज हमारी जीन्स में है, मोस्ट ऑफ अस थोड़ा डिले करते हैं हम चीजों को, बहुत बार करते हैं, आज नहीं कल करते हैं, थोड़ी देर बाद करते हैं। इस पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजों को डिले मत करो, डोंट डिले इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो दैट्स अगेन अनदर। सो दिस इज द ओल्डेस्ट एनिमी ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। कौन सी? प्रोक्रेस्टिनेशन। अरे अभी नहीं करना, थोड़ी देर बाद होमवर्क कर लेंगे, ऐसा कर। इसको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, इस चीज प्रोक्रेस्टिनेशन। थोड़ा ऑर्गेनाइज करो अपने आप को, पॉजिटिव रहो, रिवॉर्ड दो, एंड डोंट थिंक, जस्ट डू इट। नाइकी का टैगलाइन है, जस्ट डू इट, डोंट थिंक मच, जस्ट डू इट यार, कम ऑन। अब वो करना है नहीं करना, फॉरगेट इट, उठाओ, करो, फिनिश इट ऑफ, एंड दैट्स हाउ यू कैन ओवरकम। बैठ के बहुत बार प्लान करना भी इज नॉट करेक्ट। नहीं तो बहुत लोग खाली शेड्यूल ही बनाते रहते हैं, कीप ऑन मेकिंग शेड्यूल, ये वाला ऐसा रूटीन, ये शेड्यूल, रोज नई शेड्यूल, रोज नई रूटीन। सिट डाउन, वर्क, don't keep making new schedule, right?
prioritize, and this is important. ये मुश्किल है ना, बहुत बार हम नो नहीं बोल पाते लोगों को, लगता है बुरा लगेगा, थोड़ा सा हमें कभी कभी क्या पता ये सीखना पड़ेगा कि चलो अभी मेरे पास इतना काम है, अभी और 2 लोगों ने मुझे काम दे दिया, तो I'll have to tell him, please, यार अभी ना I'm already booked and I already have a lot of work, so I'll not be able to do it. I'm sorry. So we need to learn to say no. इससे आप you'll be like able to manage your work at least. So students who control and monitor their time give themselves the ability to be flexible. They understand that time can be used as an important resource. So please, you should control the time. Don't let time control you. आप time को control करो. ऐसा ना हो कि time ही हमें घुमा दे. So, I mean, this is what is, if in case I talk of the time management. So this is what was from my side. So anything you would like to share or ask or say maybe here on time management or something? Or maybe Indu ma'am would like to share something on time management and others. I think you've given brilliant ideas, and I'm thinking of now maintaining a planner. I'm going to go to the market now and get a planner and actually, see to it that I plan my time well this year. So you've given some very useful tips about, not procrastinating work, and also to, make small targets. And it's not about, managing the entire 24 hours. It's basically, say about 10 hours a day that you need to plan well to achieve your goals. Yeah, so very useful tips. That Thank you relieves so the much. And I think students also, it has given a food for thought for the students as well. That's what I tried to tell them. I mean, और ये भी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि time and stress, these are related. They are absolutely related. तो जैसे ही we say that कि भाई 24 घंटे नहीं करना है टाइम मैनेज, 8-10 घंटे करने, तो ये स्ट्रेस फ्री. अच्छा 8 to 10 hours ही तो है. It's not 24 hours. So that's why we need to definitely look at. Right. For all of us. So it's not that we don't know about these things, but now that since you've got everything together, so it has given a better perspective of the thing. True. That's the point. So just we all need to be reminded of all these basic things which we already know. All of us know. Yes. And yes. It's all about reminding us. So thank you so much. Any questions? Anyone would like to ask, sir? Or anything about a career or anything, if in case you have. Please feel free to ask if you have any questions. Okay, I think they've listened so much. If anyone has any questions, they can put it in chat box also. So people have responded in the chat box while I was asking questions. I was not able to see the chat earlier. The PPT, okay, so I think they've responded well, most of them. I think आपने समझाया इतना अच्छे तरीके से है कि एक-एक चीज बहुत क्लियर हो गई है. See, thank you so much, all of you. Thank you so much, ma'am. So take care, all of you. Thank you so much, sir, for the enlightening words. And thank you everyone for joining. And especially thank you to our principal ma'am and our teachers for letting us organize this event. So I think it's been a wonderful session, Mr. Poddar, and maybe we'll invite you for other sessions also. I know you do other sessions on group discussion and personal interviews also. Yes. So we look forward to meeting you again in person in the college. Yeah, thank you so much for taking out time for today's session. Thank you. Thank you. Pleasure, man. Thank you. Bye-bye. Yeah, bye-bye. अब मेरे को तो यही आइडिया ठीक लग रहा है. Girls, I think we can wind up the session. Thank you everybody for joining in. Please do not forget to fill up the attendance and the feedback form.